Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Now we are going to start a beautiful chapter, light, reflection and refraction. This is the first chapter of physics, and this chapter comes under the unit optics. As you know, optics means the study of nature and behavior of light and other electromagnetic waves is known as optics. तो इसमें इस चैप्टर्स में हम लोगों को वही सारी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है. क्लियर? तो लाइट जिसको कि हमको दो सेक्शन में पढ़ना है. फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हम लोग लेते हैं. क्या है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का? एज यू नो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy. Clear? And light is needed to see things around us. Without light we cannot see the things around us. As you know, light is electromagnetic radiation, particularly radiation of wavelength that is visible to human eyes. Means ये जो आपका लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये इस तरह का रेडिएशन है जिसको कि ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकता है, विजिबल है. क्लियर है? इन द वेव लेंथ ऑफ दिस विजिबल रेज ऑफ लाइट are approximately 400 to 700 nanometers. Generally in physics, the term light sometimes refers to electromagnetic radiation of any wavelength, whether visible or not. Clear? Now just move on it, and here we can see a variety of objects in the world around us. We see a variety of objects इन द वर्ल्ड अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम. बट इन डे टाइम वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट इन नाइट टाइम इट्स डिफिकल्ट टू सी द ऑब्जेक्ट. वाई? दिस इज ओनली ड्यू टू लाइट. हियर आफ्टर दिस, एज वी मूव दिस चैप्टर, द नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, एज यू नो, देयर आर टू थ्योरीज. द फर्स्ट वन इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, एंड द सेकेंड थ्योरी इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय क्रिस्टियन हाइजेंस. क्लियर? द फर्स्ट वन इज न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी और न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी. Corpuscle means small object, small particle. According to this theory, light travels in a straight line with great speed in the form of stream of very small particle called corpuscular. The elementary particle that define the light is the photon. Clear? Photon होता है वो elementary particle जो कि light को define करता है. And this particle theory of light was given by Newton in 17th century. Clear? And however, this theory explain only the reflection of light, the refraction of light and casting of shadow, because in this theory light considered as a particle and travel only in straight line, means rectilinear propagation of light. And however, it could not explain some other phenomena which are related to light, means interference of light, diffraction of light, etc., etc. So the failure of this theory leads to the origin of another theory naming wave theory of light given by Christian Huygens. According to this theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid or gas. लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है according to this theory,
और उसके प्रोपेगेशन के लिए, संचरण के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। क्लियर है? But however, this wave theory of light also could not explain about the photoelectric effect of light. So why? The failure of this theory, and failure of this theory lead the new theory, but the new theory, as you know, quantum theory of light, in which light considered as wave as well as particle, means light has dual nature. And we are going through some other electromagnetic waves like radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays, gamma rays. Clear? Visible light which human eye can only absorb, discovered by Sir Isaac Newton. Clear? Very good. Now, after this, as you know about quantum theory of light given by Albert Einstein, very good, and Max Planck. In this theory, light shows the properties of both waves as well as particles depending on the situation it is in. इस थ्योरी में ऐसा सपोज किया गया कि लाइट जो है कुछ समय के लिए पार्टिकल की तरह बिहेव करता है कुछ कंडीशंस में, और कुछ कंडीशंस में वेव की तरह बिहेव करने लगता है, और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक सीजियम और पोटेशियम, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। जब लाइट जो होता है, सनलाइट जो होता है, वो सब मेटल्स लाइक सीजियम एंड पोटेशियम पे फॉल होता है, गिरता है, पड़ता है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट बाई दैट द सरफेस ऑफ metals. These electrons are known as photoelectrons, and this whole phenomena is known as photoelectric effect. Is there any problem? No problem. This was explained by Einstein. According to the Planck, light consists of packets of quantas of energy, that's called photons. Clear? And the rest energy of photons are zero. फोटॉन्स की जो रेस्ट एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर है? नाउ ईच क्वांटा कैरीज एन एनर्जी गिवन बाय द फार्मूला। ईच क्वांटा जो होता है मीन्स प्रकाश जो होता है वो बंडलों के रूप में, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, और इस बंडलों में जो पैकेट्स होते हैं जिनको बंडल आप बोलते हैं, उनका जो फार्मूला होता है कि ये जो बंडल है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है E = H न्यू। क्लियर है? एज यू नो, E मीन्स एनर्जी, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, एंड H मीन्स प्लांक कांस्टेंट। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? Is there any problem? No problem. Now after this, we are here. An object reflects light that falls on it. This reflection of light, an object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enable us to see the things. जब तक ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। क्लियर है? And the number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow depending on light by the medium, and so on. After this, the next heading is sources of light. What? Sources of light. What do you mean by sources of light? A body which emits light in all direction is said to be the sources of light. Means एक बॉडी जो लाइट इमिट्स करे उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। अगर वो बॉडी एक से ज़्यादा है देन दैट बिकम सोर्सेज ऑफ लाइट। क्लियर? द सोर्स
और सोर्स कैन बी ए पॉइंट। अब ये सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है। क्लियर है? मीन्स सोर्स ऑफ लाइट कैन बी द फॉर्म ऑफ पॉइंट और एक्सटेंडेड। क्लियर? वेरी गुड. The sources of light are of two types. The first one is luminous source. The first one is luminous source. As you know, luminous source means an object which emits their light itself. Known as luminous source means ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद ही इमिट करें. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स. क्लियर? सन एंड स्टार्स, these are known as natural luminous source because नेचुरल है, नेचर के द्वारा बनाया गया. इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स, एक्सेट्रा आर नोन एज आर्टिफिशियल luminous source of light because ये मैन मेड है. क्लियर? Is there any problem? No problem. The next one is non-luminous source of light. Clear? Those objects which do not emit light but become visible only when light from luminous object falls on them and they becomes visible. Means ये ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं है बट लुमिनियस सोर्स से लाइट ऑब्जर्व करते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, री इमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मून, planets, these are the natural non-luminous sources of light because इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता. And wood, table, chalk, duster, etc. are known as artificial non-luminous sources of light. Clear? Now the next heading is medium of light. Medium of light. Substance through which light propagates or tends to propagates is called medium of light. मतलब ऐसा माध्यम जिसमें लाइट संचरण कर सके या संचरण करने की कोशिश करे उसको हम मीडियम ऑफ लाइट बोलते हैं. क्लियर? द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ लाइट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट medium divided into three categories. How many categories? Three categories. In the first category is, as you know, the first category will study about the transparent object. Transparent object means bodies that allow light to pass through them. मतलब ऐसी bodies जो अपनी से होके लाइट को अलाउ करें कि वो पास हो जाए, known as transparent object. For example, glass, water, fresh water, air, thin plastic, etc. are known as transparent object. The second one is translucent object. Bodies that can transmit only a part of light through them. For example, oily paper, bleached paper, ground glass. कोई भी ग्लास जो है अगर वो ग्राउंड पे रखा गया है या फिर पैराफिन और वैक्स. क्लियर? The next one is opaque object. Opaque object means bodies that do not allow light to pass through them. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जो कि अपने आप से लाइट होके पास ही नहीं होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं opaque objects. For example, wall, chair, duster, book, etc. The next one is some basic terms related to lights here. Ray of light. Most important heading for you, ray of light. What do you know by ray of light? A ray of light is the direction in which light travels. A ray of light is the direction in which light travels. Clear? In which light travels. The next heading is beam of light. What? Beam of light. Beam of light. What is beam of light? A beam of light in which all the rays, a beam of light means, a bundle of light of rays is known as beam of light. अभी आपने पढ़ा रे ऑफ लाइट, तो बहुत सारी रे को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हो जाता है बीम ऑफ लाइट. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है?
a beam of light in which all the rays moves towards a single point. For example, here you can see that there is a single point और जितनी भी सिंगल रेज हैं वो इसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह के लाइट को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। मीन्स बहुत सारी सोर्स से लाइट जो एक सिंगल पॉइंट की तरफ आ रहा है। क्लियर? दिस टाइप ऑफ लाइट इज नोन एज कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। कन्वर्ज मीन्स कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे आ जाना। द नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज इमर्ज आउट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। मीन्स सपोज कीजिए सिंगल पॉइंट, अब यहाँ से ऐसा आपको लग रहा है कि इससे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? दिस टाइप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। एक सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में देखा जाना। द नेक्स्ट वन इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल टू each other. For example, parallel beam of light, here you can see these are known as parallel beam of light. Clear? Is there any problem? Very good. Next reading we will study about reflection of light before study. Thank you.